हेलो गाइस, वेलकम टू एसएन ऑटोमोटिव। आज आपके सामने ये वाइट कलर की XUV 700 खड़ी है। इंडिया में अब तक की सबसे हॉटेस्ट सेलिंग SUV है ये। वेटिंग पीरियड भी काफ़ी लंबा है इसका, 1-1.5 साल तक का कंटिन्यू वेटिंग है। क्लाइंट को ये गाड़ी 2 दिन पहले ही मिली है। इसके ऊपर उन लोगों ने ऑलरेडी सेरामिक कोटिंग किया हुआ है। हमारे पास ये गाड़ी आई है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, दैट इज़ PPF का काम करने। सेरामिक कोटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, पर सेरामिक कोटिंग जो है उसका इफेक्टिविटी तो अच्छा है, पर उसका जो फिनिशिंग है, जो एक्सपेक्टेड फिनिशिंग क्लाइंट को रहता है सेरामिक करने के बाद, वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। तो क्लाइंट को वो चीज़ काफ़ी खटक रही थी, इसीलिए उन लोगों ने हमें गाड़ी दिखाया। हम लोगों ने भी चेक किया गाड़ी, तो उसमें आपको मैं फिनिशिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है वो दिखा देता हूँ। थोड़ा नज़दीक लो, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाइट स्पॉट जो है, दिस इज़ ड्यूरिंग जब भी हम लोग पेंट करेक्शन गाड़ी के ऊपर करते हैं तो मशीन जो है वो ये फाइबरस पोर्शन के ऊपर अगर आ गई तो इससे वाइट स्पॉट्स जो है वो आ जाते हैं। अगर आपके जो वर्कर्स रहेंगे वो हाईली ट्रेंड रहेंगे तो कभी कभी मास्किंग टेप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऐसी सब केसेस में कि मास्किंग टेप जो है वो यूज़ करो। बाकी वो वर्कर्स का भी कॉल रहता है, अगर उनको उनके स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो मास्किंग टेप नहीं भी यूज़ किया तो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट वो मशीन करते टाइम ये जो क्लैडिंग रहती है, फाइबरस क्लैडिंग रहती है, इसके ऊपर थोड़ा भी मशीन अगर घूम गया तो वो पोरस रहता है पोर्शन, उसमें जो कंपाउंड के ग्रैन्यूल्स से वो जाके अटक जाते हैं और वो निकालना डिफ़िकल्ट रहता है, तो उसमें फिनिशिंग जो है वो पूरी हैम्पर हो जाती है। जैसे ये फ्रंट क्लैडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग का निशान है, वैसे ही पीछे के भी क्लैडिंग के ऊपर है। थोड़ा दिखा देता हूँ आज। ये देखो, ये रेड और का जो क्लैडिंग है, ये देखो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग के निशान है। बैक बम्पर के क्लैडिंग के ऊपर भी है। ये तो देखो, ये धब्बा देखो, ये ऐसी टाइप की वर्कमैनशिप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते जब भी हम लोग हमारी गाड़ी सेरामिक करते या फिर PPF करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जिधर कहीं से भी आप काम करवाओ तो एक उनका वर्कमैनशिप देखो, वो कितने सालों से है, उनका एक्सपीरियंस देख लेना, और उनका जो काम करने का तरीका है एंड क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो देख के गाड़ी का काम जो आप करने वाले हो फाइनल कीजिएगा। पूरे गाड़ी के ऊपर हैवी कंपाउंडिंग के निशान है। वैसे इंटीरियर्स में भी काफ़ी सारे दाग धब्बे हैं जो हम लोग सेरामिक करते टाइम निकालते हैं, वो इन लोगों ने निकाला नहीं है। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये सीट है 2 दिन पुरानी गाड़ी का, या आर्मरेस्ट 2 दिन पुरानी गाड़ी का। ये देखो काफ़ी सारे दाग धब्बे, उसी के साथ वो सीट के ऊपर भी देखिए बहुत हैवी स्टेन्स है। रूफ टॉप के ऊपर भी काफ़ी सारे हैवी स्टेन्स है। तो अभी हम लोग जब भी PPF करने वाले हैं तो हमारा तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता ही है कि हम लोग गाड़ी के ऊपर पूरा क्लीनिंग करते हैं। इंटीरियर्स में भी हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी का जो है कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग के बाद उसके ऊपर फिर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का काम होगा। उसी के साथ गाड़ी के ऊपर हम लोग सन कंट्रोल फिल्म का भी एप्लीकेशन करने वाले हैं, जो कि हम लोग फ्रंट में 94% एयर कंट्रोल फिल्म लगाएंगे और साइड एंड रेयर के ऊपर 70% एयर कंट्रोल फिल्म लगाएंगे। उसी के साथ गाड़ी के अंदर ऑलरेडी 70 मैच डली हुई है, पर उसका भी क्वालिटी कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गाड़ी का तो 70 मैटिंग चेंज नहीं करेंगे। अभी लिया ही है तो वो यूज़ करने देना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्लाइंट को बोले कि अभी यूज़ करो। हम लोग उसको जो है फ्लोर लैमिनेशन करके लेंगे, ताकि नीचे का जो फ्लोर है वो गंदा ना, और बारिश के टाइम उसको मॉइस्चर पकड़ के वो पंजन स्टिंग भी कर सकता है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया कि यू शुड डेफिनेटली गो अलॉन्ग विद इंटीरियर प्रोटेक्शन, दैट इज़ फ्लोर लैमिनेशन। एंड उसी के साथ हम लोग गाड़ी का जो पियानो फिनिश रहता है, ये गाड़ी को तो काफ़ी सारा पियानो फिनिश दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम लोग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का काम करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपने भी अगर कोई नई गाड़ी ली रहेगी तो आपको भी नॉलेज मिलेगा गाड़ी के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, क्या क्वालिटी चूज़ करनी चाहिए, कौन सा काम करना बेटर है, और आपको कौन से वेंडर से काम कराना चाहिए। तो चलिए आइए अभी वीडियो शुरू। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away,
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing
play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan, and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom. Read some books, something written, watch the best, teach a system I invest. Never hidden, I ain't scared, ain't no chicken, I take days.